Hi everyone. A very good evening to all of you. And thank you so much for joining BBA Funda's live session. तो काफ़ी टाइम से हमने इस चैनल पर लाइव सेशन नहीं किया है एंड काफ़ी टाइम बाद एक लाइव सेशन कंडक्ट किया जा रहा है। आई होप दैट यू फाइंड दिस लाइव सेशन इन्फॉर्मेटिव क्योंकि आज आई एम गोइंग टू गिव यू लाइव अपडेट्स अबाउट KIIT डब्ल्यू 2026 जिसके फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, जिसकी डेट्स निकल गई हैं। तो हम KIIT यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके BBA कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे and we will be discussing about the dates and updates. So before I start with the live session, अगर आप लोग मुझे सुन सकते हो, if I am audible, then please send a thumbs up in the chat box. That would be great. क्योंकि कई बार ऑडियो इश्यूज होता है एंड आई डू नॉट वांट एनी ऑफ यू गाइस टू मिस आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सो इफ यू गाइस कैन हियर मी एंड इफ आई एम ऑडिबल देन please send a thumbs up in the chat box so that I can make sure that you guys can hear me. Okay, great. Hi Shaurya, thank you so much for letting me know. Apart from that, अगर आपकी कोई भी डाउट या फिर क्वेरी है, then please let me know in the chat box and I will try my best to address them. Okay. तो मैं हर लाइव सेशन में क्या करती हूँ, आई शेयर माई स्क्रीन एंड आई काइंड ऑफ शेयर द इंफॉर्मेशन विद यू वट एवर आई हैव नोटेड डाउन। तो आज के लाइव सेशन में मैं ऐसा ही कुछ करने वाली हूँ। ठीक है। हाय शुभ, how are you doing? Thank you so much for taking out the time and joining the live. Today, as I mentioned, I will be talking about KIIT University, about its BBA course, about the entrance exam that it conducts, which is KIIT W 2026, and its dates and updates. So let me just quickly share my screen with all of you, okay? So first, let me know if you guys can see my screen. मैंने यहाँ पर उसको स्क्रीन को बड़ा कर लिया है। So, Shubh, KIIT is located in Bhubaneswar. ठीक है, now KIIT बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है दैट KIIT बच्चे सिर्फ साइंस परस्यू करने जाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। KIIT is equally known for its management courses. ठीक है, it is a very well known university, very well reputed courses. It is a private deemed to be university in Bhubaneswar. NIRF 2025 की रैंकिंग के अनुसार इट इज ऑन द 17th position and it is NAC A++ accredited. Okay, it offers BBA 3 to 4 years, यानी कि आप 3 साल का BBA भी pursue कर सकते हो and you can also additionally pursue a 4th year which is BBA honors. एंड अगर आप 4th ईयर का BBA पढ़ते हो देन इट विल लीड टू ऑनर्स और रिसर्च, राइट? तो NEP 2020 के अनुसार in any college or university that you enroll to, if you are additionally pursuing a 4th year of BBA, it will lead to an honors or a research degree. BBA के बाद MBA करना चाहिए या नहीं? So this is a very subjective question. इसके आंसर्स काफी वैरी करेंगे। अगर आप किसी और से पूछोगे देन उसके आंसर्स शायद मुझसे वैरी करे। But I will be giving you a very honest opinion of mine. First of all, MBA is a very expensive degree and it is a professional degree. So firstly, I would like to say that opt for an MBA after BBA. If you know what are your intentions with the degree, अगर आपके पास clarity है कि what you want out of the MBA degree, for example, अगर आपका goal है कि मुझे corporate ladder चढ़ना है, that is the reason I want to pursue an MBA. अगर मुझे एक field में expertise लेनी है, that is the reason I want to pursue MBA. मुझे IIMs में पढ़ना है, दैट इज प्रोबेबली व्हाई आई वांट टू परस्यू एन MBA. मुझे अब्रॉड जाना है. So every student has a very different career goal.
you need to be very clear with your career goal. You need to have some clarity. What do you want out of your MBA degree? That is number one. बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो MBA परस्यू तो कर लेते हैं but they don't really know what they want out of it and then they get bored. They think that MBA की कोई value नहीं है. And also आजकल हर दूसरा बच्चा MBA कर रहा है, so the competition is very very high, just like हर दूसरा बच्चा जैसे बीबीए कर रहा है. सो दैट नंबर वन इज हैव सम क्लैरिटी कि आपको क्या करना है. आपके एमबीए डिग्री से आपको व्हाट इज द काइंड ऑफ आरओआई दैट यू वांट. सेकंड इज डू यू हैव दैट काइंड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एन एमबीए. बिकॉज एमबीए अगर आपने किसी टॉप बिजनेस स्कूल से नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल आईआईएम, एक्सेलराई, ओके, ऑल ऑफ दीज यू नो यूनिवर्सिटीज, एमबीआई. तो अगर आपने किसी अच्छे यूनिवर्सिटी या कॉलेज से एमबीए नहीं परस्यू किया, इफ इट्स नॉट अ टॉप बिजनेस स्कूल, देन आपकी एमबीए डिग्री की उतनी वैल्यू नहीं होगी. तो बिकॉज इट इज अ प्रोफेशनल मास्टर्स डिग्री, so you need to have some sort of a financial planning, financial backup for doing an MBA course. So जस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड कि क्या आपके पास वो है या नहीं है. ठीक है. अदरवाइज इफ योर करियर गोल्स आर क्लियर देन ऑफ कोर्स आप एमबीए करो. अगर आपको लगता है कि नहीं वही सेम एक्सपीरियंस मैं 5 साल कॉर्पोरेट में काम करके कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, देन आई थिंक यू एब्सोल्युटली डू नॉट रिक्वायर एन एमबीए. यू कैन स्टिल work in corporate, learn those skills, do some certification courses, and still climb the corporate ladder. So it is a very subjective answer. It is never a definite yes or a definite no. It completely, depends from person to person. Okay. BBA के बाद I always, advise to get a job rather than doing an MBA. The reason being, अगर जब आप job में घुसते हो, when you are in corporate, then corporate gives you an overview of how business work, how leadership works, management works. It improves your communication skills. It lets you know कि business verticals कैसे काम करते हैं. It lets you, you know, uh, it teaches you how to interact with different management. It teaches you your job on field. For example, अगर आप finance में हो या HR में हो या marketing में हो, it will teach you your job on field rather than in textbook. So the job, trust me, that you do on field is very different than what you study in your textbook. So I always advise a student कि आप please 1 साल, 1.5 साल, 1 to 2 years try to work in corporate and get experience before going for an MBA. Because also like the top MBA schools like IIMs or XLRI, right, they also require certain amount of job experience before getting into their MBA course. Or you need to sit for CAT, or else अगर आप abroad भी जाते हो, you need certain amount of work experience. तो work experience will help you understand MBA course better. जब आपको वो professional चीजें classroom में पढ़ाई जाएंगी ना, तो you will understand better because आपके पास already वो corporate experience होगा. You will already have that knowledge on how leadership works, what is teamwork. आपका अगर आप finance में MBA कर रहे हो and already आप finance में 2 साल 3 साल काम कर चुके हो, आपकी ऑन फील्ड जो काम होता है वो कैसा होता है. तो taking all that experience and then doing an MBA makes much more sense, than just blindly going for an MBA is what I'm trying to say. But of course, again, it depends from a person to person. So do what works the best for you. That is just my opinion. Okay. Yes, Shubh, I had commerce with maths in class 12. Yes, अगर आप अभी बीएससी पढ़ रहे हो and you want to transition into HR and marketing, MBA will be a good option for you. It is a professional course and MBA में बहुत सारे जो बच्चे हैं different different background से आते हैं. Even engineers do MBA, so I don't think there will be
any problem. ठीक है, but of course do your research well before enrolling yourself into an MBA specialization. Talk to professors, go through the college curriculum, what they are about to teach you. Research very, very well before you enroll yourself into an MBA course. Okay. So, okay. Now let me just continue with the update, guys. आपकी जितनी doubts and queries हैं, आप chat box पे लिख दो, and then I will definitely come back to them. But let me just give you the update, and then I will come back to them. Okay? Don't worry, I will try to answer as much as possible. तो where was I? Yeah. तो KIIT यूनिवर्सिटी जो है ये BBA कोर्स ऑफर करता है, काफी वैरायटी ऑफ स्पेशलाइजेशंस भी ऑफ कोर्स है। 3 से 4 साल का BBA कोर्स है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। तो 10th एंड 12th का जो आपका एग्जामिनेशन है, यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है 50% मार्क्स की, यानी कि 10th एंड 12th में आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना है। उसके अलावा यहाँ पर मैथ्स, बिजनेस मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कंपल्सरी है in the +2 level. So class 12 में you really need to have at least one of these 4 subjects compulsorily. तो मैथ्स, बिजनेस मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, तो इन चारों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए इन क्लास 12. ओके, ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर द BBA कोर्स. Now, admission process, as I mentioned, it is you have to appear for the entrance examination, which is KIIT and no application fee. So, कोई भी application fee applicable यहाँ पर नहीं होगा. Okay, you can register absolutely free of cost. एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा समझ लेते हैं. कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि CBT है, ऑनलाइन होगा. एडमिट कार्ड में जो टेस्ट का टाइम दिया गया है उससे 45 मिनट्स पहले आपको टेस्ट सेंटर पर पहुंचना जरूरी है. आई रिपीट, एडमिट कार्ड में जो टाइम आपको दिया गया है फॉर योर एग्जामिनेशन, उससे 45 मिनट्स पहले आपको टेस्ट सेंटर पर पहुंचना जरूरी है. ठीक है. Question type is MCQ, which is multiple choice questions. So every question will be followed by 4 options. You will have 4 options. अगर आपने सही जवाब दिया, you will get +1. अगर आपने गलत जवाब दिया, you will be getting -1. ठीक है. 150 मिनट्स का ये टोटल पेपर रहेगा. मीडियम रहेगा इंग्लिश, एंड देयर विल बी 4 सेक्शंस इन टोटल. ओके. एग्जाम सिलेबस की मैं बात करूं, there will be 4 sections, right? तो सबसे पहला रहेगा mathematical ability, which will be having 30 questions. Analytical and logical ability will be having 30 questions. Verbal ability 40 questions, and GK will be having 20 questions. तो ये 4 sections रहेंगे: maths, analytical and logical ability, verbal ability, and general knowledge. All right. Shubh, cash flow statement and debentures in accounts. I can very well understand where you are coming from. I honestly feel the same about this particular topic. It used to suck my blood too. So yes, I can completely understand. See, the only thing that I can suggest is you will have to practice a lot. ठीक है. देयर इज नो सच, क्योंकि मैथ्स की तरह इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है कि आप x+y इक्वल टू समथिंग समथिंग. तो इसका ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, राइट, फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स. यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स of debit, credit, and it really comes down to that, right? When you are balancing a sheet, when you are making a cash flow statement and everything, right? So जितना आप प्रैक्टिस करोगे, and what I would suggest is, really try and practice. When you are practicing, do not try and practice
5 एग्जाम्पल्स 10 एग्जाम्पल्स एट वंस जो कि एक ही पैटर्न का है. So for example, when you're practicing a question, there are different patterns, right, of questions. So if you're practicing 10 questions, make sure there is one particular question जो एक पैटर्न का हो, टू क्वेश्चंस जो एक पैटर्न का हो, राइट. तो एक पैटर्न के दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, so that there are 10 questions in total. So you are practicing 5 different patterns. Shubh, am I making sense? ठीक है. तो एक एक पैटर्न का दो दो क्वेश्चन एटलीस्ट प्रैक्टिस करो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन. क्योंकि अगर आप पास 10 years के पेपर्स देखोगे या जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर होता है इन योर कॉलेज, ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स के भी आते हैं सैम्पल बुक्स आते हैं विच इज लाइक दिस थिक, ठीक है. तो वहां से बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होता है एंड इट इज रियली जस्ट क्रैकिंग दैट पैटर्न, क्योंकि कई बार वही पैटर्न एग्जाम में भी आता है, ठीक है. कभी आपको फिर मुझे एग्जैक्टली अभी तो याद नहीं आ रहा बिकॉज इट्स बिन लाइक इयर्स राइट नाउ, तो मुझे अभी एग्जैक्ट वर्डिंग्स याद नहीं आ रही हैं. बट यू नो एवरी क्वेश्चन विल हैव अ डिफरेंट वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट. मतलब आपको कुछ क्वेश्चंस में एक चीज रहेगा तो कुछ क्वेश्चन में वो नहीं रहेगा. So there are very different, every question is not of the same pattern, if it makes sense, Shubh. If it, Shubh, अगर आपको नहीं समझ आया तो you can cross question. I hope it made sense. Um, which is the best and highest paying MBA specialization right now? Look, if I talk about particular specializations, one it has to be data analytics, both in BBA and in MBA, because analytics is something data ke basis per, you know, every company is running, right? Without data, nothing is happening. Okay, so data is everywhere. You can literally see kitne um, कंट्रोवर्सीज भी हो रहे हैं रिगार्डिंग डेटा, राइट, कि डेटा ब्रीच हो रहा है, मेटा ये कर रहा है. बट द थिंग इज कि टू टैप इनटू टू टैप इनटू द कंज्यूमर माइंडसेट, डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको स्ट्रेंजर थिंग्स दिखाना है या डार्क दिखाना है या मनी हाइस्ट दिखाना है या फैमिली मैन दिखाना है ऑन नेटफ्लिक्स, दैट इज रियली कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर एल्गोरिदम, योर डेटा. Netflix needs your data, Spotify Wrapped needs your data, YouTube needs your data, Instagram Reels needs your data. Data is everywhere. Data analytics is the next big thing, both in BBA and in MBA. So try to dig into analytics, okay? Data analytics and definitely AI. AI is also the next big thing. Believe it or not, AI will not be taking your job. AI is just taking repetitive jobs. Okay, AI is not taking jobs, it is just taking repetitive jobs. So AI is here to make your work efficient, but you have to learn how to work with AI. तो एआई का जो स्पेशलाइजेशन है, चैट जीपीटी प्रॉम्प्टिंग, ओके, एंड एनालिटिक्स, all of this you will really have to dig into this. These will be the top two, and of course fintech. So fintech is not ट्रेडिशनल अकाउंटिंग. फिनटेक इज जैसे यूपीआई पेमेंट्स हो गए, ब्लॉकचेन हो गया, क्रिप्टो हो गया. So all of these come into fintech. So also dig into fintech as well. Okay. Okay. So guys, we are almost at the end of the live session now. तो मैं एक बार आपको बस ये dates बता देती हूँ for KIIT. अभी टेंटेटिव डेट्स निकली नहीं है. द एप्लीकेशन इज ऑनगोइंग. ठीक है, तो अगर आप KIIT के वेबसाइट पर जाओगे ना, तो द एप्लीकेशन इज ऑनगोइंग, सो यू कैन यू नो start filling the application form for KIIT University.
राइट। सो द एप्लीकेशन इज ऑनगोइंग, टेंटेटिव डेट्स नहीं निकली है, लास्ट डेट अभी तक नहीं निकला है, बट यू कैन स्टार्ट फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। ट्यूशन फीस की अगर मैं बात करूं तो 10,50,000 रुपीज अप्रोक्सीमेटली, यानी कि आपका जो 3 से 4 साल का फीस रहेगा वो 10,50,000 के अंदर अंदर रैप अप हो जाएगा। ठीक है। Placements की अगर मैं बात करूं, then the highest international salary. So I am talking about the international salary that was somewhere around 18 lakh. Domestic salary is 20 lakh and average salary is 9 lakh. Now यहाँ पर मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ when it comes to placements. जो colleges हैं and universities हैं, they proudly show 19 lakh and 20 lakh placements, right? ये उनके वेबसाइट पर दिया हुआ है, राइट? बट आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट आफ्टर डूइंग योर बीबीए कोर्स, द एवरेज सैलरी that a student usually gets is somewhere between 3 to 5 LPA. That is the average salary in India. ठीक है। आप 10 LPA तक भी कमा सकते हो, बट यू विल बी रिक्वायरिंग एक्सेप्शनल स्किल्स. Maybe you have specialized in a domain like product or AI or analytics or fintech. You have a lot of internships and relevant work experience. You have a good digital portfolio. So it really depends on a lot of factors. अब ये जो हाईएस्ट सैलरी यहाँ पर दिखाया है, जस्ट डिस्क्लेमर दैट डोंट थिंक कि ये सारे बच्चों को मिल रहा है. दिस इज 1 in a million केस. ठीक है। मेरा काम है आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, बट मेरा काम ऑल्सो है आप तक ऑनेस्ट इंफॉर्मेशन पहुंचाना. So I also feel that I must, you know, give you this disclaimer that whenever you are taking admission in a college, also keep in mind that placements के वक्त the average salary in India right now is 3 to 5 LPA, and you have to work very very hard if you want a good placement above 5 LPA, even 5 LPA. ठीक है। तो इट इज नॉट कि कॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि हाँ बच्चे ने 3 साल पढ़ाई की, ये पहले की तरह जॉब मार्केट काम नहीं करता है। ठीक है कि बीबीए डिग्री है तो जॉब मिल जाएगा. The job market is not working like that anymore. Just wanted to let you guys know that. Okay. So you will have to work very hard to get a 10 LPA job. And I have actually also debunked placements and salary packages after BBA and actually roadmap to getting a 10 LPA job after BBA. So you can check those videos out too. But yes, this was my responsibility to tell you. सीयूईटी के लिए कौन से सब्जेक्ट आप चूज करोगे? देखो, फॉर शहीद सुखदेव, for Delhi University, there is a very specific subject combination, right? So, I hope that you're asking for BMS and BBA Financial Investment Analysis. So, list A में you can choose any one subject. Section 2 में, so see, you need to know कि section 2 is your domain, right? Section 2 में आपका maths और applied maths is required. So if you are, taking admission into any college under Delhi University, then maths or applied maths is required. It is compulsory. Okay. So section 2 has to be maths or applied maths. And section 3 is general test क्योंकि वो language होता है. ठीक है. Section 1 में you can actually choose anything that you have studied in class 12th. It can be economics or it can be commerce, right? It can be any subject that, because list A जो होता है, it provides you with a variety of subjects. So that with this subject combination, you can actually crack not only SSC BCS, SSC BS, but also you can crack Shahid Sukhdev के अलावा बहुत सारे colleges under Delhi University because the subject combination is the same. ठीक है. So say any subject from list A, section 2 में आपका maths या applied maths रहता है.
एंड सेक्शन 3 में आपका जनरल टेस्ट रहता है. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन. बिकॉज शहीद सुखदेव दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, तो इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ नॉट ओनली शहीद सुखदेव, यू कैन टारगेट अदर कॉलेजेस एज वेल अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी. ओके. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सीयूईटी हर साल अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बदलता रहता है. So let's see what CUET comes up with this year in 2026, and whatever update they come up with, of course, I'll let you guys know. And I really hope that I have cleared all your doubts and queries. Um, so this is the end of today's live session, and I will be back with another live session very, very soon. If आप लोगों को लगता है there is any more doubt and query that you want me to answer, then stay tuned on the channel. I will be conducting a live session soon next week. ठीक है. I have not been, like, I had a lot of cough and cold, तो मैं नहीं कर पाई थी. But next week, of course, we will be conducting another live session. Okay. And if you want more expert help, then comment section की pinned में and जो description है वहाँ पर there will be a link, and you can click on that link, register yourself for absolutely free of cost. And our Sunstone's expert admission counselors will get in touch with you. They will help you, they will guide you. You will not have to spend any money on that. It's absolutely free. Okay. So thank you for your time. Thank you for being such a wonderful community. And thank you for being here. I will see you guys very, very soon next week. एंड मुझे प्लीज सजेस्ट करना कि मैं और क्या क्या टॉपिक पर लाइव सेशन करूं या वीडियो बनाऊं, एंड आई वुड लव दैट. ओके, सी यू गाइस सून. थैंक यू सो मच.